साथ क्या ड्रामा होगा? तू सही था छोटे, तू चाहिए। बढ़िया। मेरे दही भल्ले आएंगे, जरूर आएंगे। बजट नो प्रॉब्लम। कहानी में ट्विस्ट कैसे? Good afternoon, everyone. Welcome to all to the Vanik Smart Class. This is Tapas sir, and we're going to discuss the daily current affairs of 27th April 2023. Those who are online can share this link to your friends, and you can use the chat box for all your doubts and all. Welcome you all again. Without wasting your time, let's start the today's session. Here is question number one. Which regulatory body imposes a penalty on the cooperative banks? Those who are online, try to participate. So you can guess the answer if you don't know. And I hope that this guess will be correct. Trust me, RBI 44 Pro, very good. The answer is Reserve Bank of India. As you all know that the Reserve Bank of India is the regulator of all commercial banks in India and as well as the regulator of the cooperative banks. And in case of violation of any types of norms of Reserve Bank of India, it can impose penalty on cooperative banks as well as the commercial banks. Okay, it runs as per the RBI Act 1934 and Banking Regulation Act 1949. If some bank violate the regulations and rules of Reserve Bank of India as well as the Banking Regulation Act, then RBI has all the rights to impose penalty on it. And recently it has imposed a penalty of 44 crores to 4 cooperative banks. Okay, imposed penalty of 44 crores to 4 cooperative banks for violation of various norms. So, as per the rules and regulations of RBI, if you categorize bank into two types, one is called scheduled bank, and one is non-scheduled bank. It's a little bit of fundamental we're going to discuss now. Scheduled banks are those banks which are coming under the second schedule of RBI Act 1934. Okay, second schedule of RBI Act 1934. Those banks which are coming under these norms are called scheduled banks, and the scheduled bank can enjoy many types of benefits, like it can take loan from Reserve Bank of India for long-term basis. Okay, most importantly, it will be the part of payment and settlement system of our country. That's why the scheduled bank can issue check by their own name, and most importantly, the deposits of scheduled bank will be secured by DICGC. Okay, these are the three major benefits are enjoying by a scheduled bank. Okay, many of the interviewers ask these questions to the fellow students of ours who got qualified in IBPS PO in recent times, and they ask these questions like what is scheduled bank, what are the benefits enjoying by a scheduled bank. These types of questions asked in last interviews. So scheduled banks is basically categorized into two types. One is called commercial bank and one is called cooperative bank.
One is called commercial bank and one is called cooperative bank. Commercial bank, one is called cooperative bank. What are the major difference between a commercial bank and a cooperative bank? A commercial bank is a bank which main objective or operational objective is to make profit or maximize the profit. That bank is called a commercial bank. Take an example: public sector banks, private sector banks, RRBs, small finance banks, foreign banks. These are all an example of commercial banks. Okay, and those who are cooperative banks are those banks which intention or objective is mutual benefit, not profit orientation. Okay, and the members or the account holder of the cooperative banks are called their members, but account holder of the commercial banks are called the depositors, but in case of cooperative banks they are called the members. Okay, so the members of the cooperative banks and the cooperative structure in India has divided into two types. अगर ज़्यादा अंदर मतलब डिस्कस करने जाए तो कोऑपरेटिव का पूरा स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ेगा अभी. ओके ठीक है, अगर हम जाते हैं तो थोड़ा डेप्थ में जाके उसका अंडरस्टैंड कर लेते हैं. इन इंडिया cooperative banks are subcategorized into two types. One is urban cooperative bank, one is rural cooperative bank. And again the rural cooperative banks have made three tier structure. One is state cooperative bank, one is district or central cooperative bank, and the last one is PACS or primary agriculture credit societies. Okay, and these cooperative banks like state cooperative banks and district cooperative bank, these cooperative banks are regulated by the Reserve Bank of India. And here, as these cooperative banks violate some rules regulations of Reserve Bank of India, it has imposed some amount of penalty, and that penalty amount is 44 crores. Got it? 44 crores. Here we have different types of bodies like SEBI. SEBI is a statutory body which headquarters is situated in Mumbai. It was established in the year 1988 and its act was passed in 1992. Here is IRDI. IRDI stands for Insurance Regulator and Development Authority of India, which headquarters is situated in Hyderabad. It is a regulator of all the insurance sectors in India. Here is PFRDA. It's Pension Fund Regulatory and Development Authority of India, which headquarters is in New Delhi, and it regulates the pension sector in India. Here is Reserve Bank of India. It is a central bank of our country. It's situated in Mumbai. It was established in the year 1935 with rupees 5 crores. Its act has been passed in 1934 and it was nationalized in the year 1949. Okay, these are some vital informations. Initially, the headquarters of RBI was in Calcutta, but in the year 1937, it is permanently shifted to Mumbai. Got it? Now, Mr. Shaktikant Das from Odisha is the chairman or the governor of the Reserve Bank of India. Next, NABARD. NABARD stands for National Bank for Agriculture and Rural Development. It was established in the year 1982. It is exclusively meant to fulfill the credit needs of the rural and agriculture sector in India. It was established in the year 1982 with 100 crores of capital, but now the capital of NABARD is reached to 30,000 crores. Got it? These questions might ask in your exam, like your interview. They can ask these questions. So,
लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई जस्ट होप कि जो भी हम डिस्कस किए थोड़ा इसके डेप्थ में जाके उसको आप समझ में आया होगा आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What did the Reserve Bank of India announce regarding the provision norms of urban cooperative banks? This question also related to this uniform. Option C will be the answer. They have unified the provisions norms of standard asset across all the categories of UCBs. Here is the conceptual based question. Answer would be C. Answer would be C, but this is comes again as a concept of question. Here it is written the standard asset. Those who know better about standard asset, they can answer over here. Okay, here is some place where discussing some little data. Everybody must know about non-performing asset who are preparing for banking and SSC examinations. Non-performing asset. Okay, what is non-performing asset? Nowadays, the biggest problem the banking sectors are facing is non-performing asset. Non-performing assets are those assets, okay, or those loans which is overdue for a period of 90 days. ओके अगर कोई लोन लेता है, कोई इंस्टीट्यूशन हुआ, कोई इंडिविजुअल हुआ लोन लेता है, तो उसकी ड्यू डेट से 90 डेज तक अगर वो लोन का अमाउंट कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो उस अमाउंट को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलेंगे। टेक एन एग्जांपल, हियर इज अ डेट, जिस डेट में हम हमारा ईएमआई पे करते हैं और इसका इंटरेस्ट पे करते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं उस टाइम में। okay, take an example, this date is called due date. okay, this date is called due date. ड्यू डेट से लेकर 90 डेज तक ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, दिस पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एसेट. This period of time is called the standard asset period time. okay, 90 days. so अभी अगर हम समझना चाहे कि एनपीए क्या है, तो एनपीए है कि अगर कोई लोन लेता है, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, कौन सा कंपनी हो गया, इफ दे आर टेकिंग लोन्स and they are not paying their interest or principal amount or EMI amount from the after the 90 days of its due date. 90 दिन हो गया और कुछ भी वो पे नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम टेक्निकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलेंगे. ठीक है. नाउ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगेन 3 तरीके से हम डिवाइड किए हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट को. अगर अप टू 1 ईयर के लिए, 90 डेज से 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसका हम सब स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे. ओके. अगर वो पीरियड ऑफ टाइम 1 साल से ज्यादा हो गया और वो एनपीए होके रहा है 1 साल से ज्यादा हो गया, देन विल बी कॉल्ड डाउटफुल एसेट. डाउटफुल एसेट्स. एंड इन दिस पीरियड ऑफ टाइम if the internal auditor or external auditor, आपको पता होगा ना ऑडिटर क्या है, जो हमारी कंपनी में आके हमारे बैलेंस शीट चेक करते हैं, कौन कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किस प्लेसेस में हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, कौन सा सोर्सेस ऑफ इनकम हुआ. दिस आर ऑल ऑडिटेड. if the internal auditor or external auditor of a bank will declare that the amount of money will not be received or it is not recoverable, then it will be considered as loss asset. So I just hope you to understand that the NPA is categorized into 3 types. One is substandard, one is doubtful asset, and one is called loss asset. Got it? So अगर हमारी कंपनी अभी लॉस कर रहा है, हमारे बैंक अभी लॉस कर रहा है, तो क्या करेंगे उसके, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो कंपनी डूब जाएगा ना. इसीलिए banks as maintaining some amount of provisions. okay, bank is maintaining some amount of provisions.
प्रोविजन का मतलब ये है कि अगर हमारा लोन कल डूब जाता है तो हम आउट ऑफ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट से कुछ पार्ट इसके लिए रिजर्व करके रखें, क्योंकि अगर लोन का पैसा कभी डूब जाता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्राइसिस में ना आए, उनको हम मेकअप कर सकते, इसलिए हम कुछ प्रोविजन मेंटेन करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट वी आर मेकिंग सम अमाउंट ऑफ प्रोविजन। सो हियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव द स्टेटमेंट, ओके। ये शायद आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कैटेगराइजेशन क्या है, उसका मतलब टाइप्स क्या है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोविजंस कितना कितना मेंटेन किया जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बहुत ज़्यादा प्रोविजन मेंटेन किया नहीं जाता। अभी ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द प्रोविजन नॉर्म्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हुआ तो उनके ऊपर कितने अमाउंट का प्रोविजन ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी सी, दे विल हैव अ यूनिफाइड प्रोविजन नॉर्म्स फॉर द स्टैंडर्ड एसेट। आपको पता चला होगा स्टैंडर्ड एसेट क्या है। स्टैंडर्ड एसेट वो एसेट है जो कि हमारे ड्यू डेट से लेकर 90 डेज तक, जिस टाइम से ड्यू डेट हो गया कि ईएमआई देना है, पैसा देना है, वहीं से लेकर 90 डेज तक अगर जो पीरियड ऑफ टाइम रहा उस पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट। तो स्टैंडर्ड एसेट के टाइम में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो भी तरीके का लोन दिया जाता है, लाइक पर्सनल लोन हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लोन हो गया, होम लोन हो गया, उन सब के लिए एक यूनिफाइड रेट में हम प्रोविजनिंग मेंटेन करेंगे, और प्रोविजन मतलब कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमको मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। द आंसर विल बी सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा सा लिंक होता है इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज द एम of the harmonizing the provisions norms of standard asset across all the categories of UCBs, urban cooperative banks. So here is the answer. Answer is C. To simplify the regulatory framework of UBCs. Urban cooperative banks में जो norms है, जो regulations है, उनको simplify करना ही इसका objective है, इसीलिए सब कुछ ऐड करके हम एक ही परसेंटेज में चले गए, that is 0.25% of provision on the remaining amount, okay। for example अगर 1 लाख रुपया का लोन अमाउंट अभी ड्यू है तो 1 लाख का 0.25% हमको मेंटेन करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्ड एसेट और बिफोर हैपनिंग द नॉन परफॉर्मिंग एसेट, okay। that is the rule Reserve Bank of India has recently implemented on this, got it। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Question number 4. What is the uniform provisions required for the direct advantage of the agriculture and SME sectors that are standard for all the categories of urban cooperative banks? अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो जो सेक्टर्स होता है जहाँ भी लोन दिया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर हो गया, उस सेक्टर के लिए एक यूनिफॉर्म रेट में हम प्रोविजन मेंटेन करेंगे। दिस यूनिफॉर्म रेट इज 0.25%, ओके, 0.25%। यहाँ अगर और थोड़ा डिटेल में हम जाए 0.25%, और कोई कौन सा भी कॉमर्शियल बैंक में हम देखें कि प्रोविजन कितना कितना मेंटेन किया जाता है, तो ओवरऑल स्टैंडर्ड एसेट के टाइम में, स्टैंडर्ड एसेट का मतलब यह है कि ड्यू डेट से लेकर 90 डेज तक जहां एनपीए डिक्लेयर नहीं हुआ है, उस टाइम में अगर देखा जाए तो 0.4% का इंटरेस्ट और प्रोविजन हम मेंटेन करते हैं। अगर वो एसेट सब स्टैंडर्ड कैटेगरीज में चला गया, वो एसेट भी सब स्टैंडर्ड कैटेगरीज में चला गया, सब स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि एनपीए हो गया, और एनपीए होने के बाद 1 साल, कितने 1 साल तक हमको अगर प्रोविजन मेंटेन करना चाहे तो 15% रिमेनिंग अमाउंट में हम प्रोविजन मेंटेन कर सकते हैं, अगर वो एसेट एक सिक्योर एसेट होगा। सिक्योर एसेट का मतलब ये है कि कौन सा कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में हम लोन दिए, ओके। तो बैंक हैज गिवन लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटीज लाइक मॉर्गेज, गोल्ड, हाइपोथिकेशन, ओके, एंड इफ it is unsecured,
इफ इट इज अनसिक्योर का मतलब ये है दैट लोन हैज बीन गिवन बट उसके अगेंस्ट में हम कुछ भी कोलैटरल सिक्योरिटी मेंटेन नहीं किए, मतलब कुछ भी मॉर्गेज रख के हम लोन दे दिए, तो इस टाइम पे बैंक हैज टू मेंटेन 25% ऑफ प्रोविजन ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द लोन। ठीक है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, 15% एंड 25%। अगर उससे भी ज्यादा जाता है डाउटफुल एसेट, तो डाउटफुल एसेट को भी हम कैटेगरीज किए हैं। अगर डाउटफुल एसेट पहले साल का हुआ है तो हमको 25% मेंटेन करना पड़ेगा। अगर डाउटफुल एसेट 2 और डाउटफुल एसेट 3 हो गया तो हमको 40% मेंटेन करना पड़ेगा। अगर डाउटफुल एसेट 3 से भी ज़्यादा टाइम हो गया, उसका मतलब ये है कि 3 साल से ज़्यादा पैसा रिकवर नहीं हुआ, तो हमको 100% प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, और वहाँ भी अगर लॉस हो गया, एसेट कंप्लीटली लॉस हो गया कि है ये एनपीए कभी भी रिकवर नहीं हो सकता, तो भी द बैंक हैज टू मेंटेन 100% ऑफ दैट प्रोविजन। 100% प्रोविजन का मतलब ये है कि जितने अमाउंट का मनी हमको रिकवर नहीं हुआ है, उस अमाउंट ऑफ का सेम अमाउंट ऑफ मनी विल बी provisionalized or it will be stored or kept out of the profit by an institution or a bank. Okay, आई होप ये थोड़ा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन एट द एंड हम थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किए और आगे जाके डिस्कस किए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, which urban cooperative bank has been categorized at tier 1 by Reserve Bank of India? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी डिफरेंट टाइप से हम डिवाइड करते हैं। बोलिए आंसर क्या होगा? आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी, both A and B. Only units urban cooperative banks and salaried earned urban cooperative bank irrespective of deposit size and urban cooperative bank have been deposit of 100 crores and more, they are comes under the tier 1 category of Reserve Bank of India. Okay, that comes under the tier 1 categories of the Reserve Bank of India. अगर इंडिया में कोई भी पेमेंट बैंक स्टार्ट हो, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, तो व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट और अमाउंट रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट दिस पेमेंट बैंक? इट विल बी 100 करोड़। ओके, अगर कोई हमको स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया में कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट करना चाहे, तो मिनिमम अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड इज रुपीज 200 करोड़। If someone want to start a private sector bank or an universal bank, then we need 500 crore to start this. And if some foreign banks, if any foreign bank want to open its branches in India, then the minimum amount required is rupees 500 crores, and 500 crores में ही वो वाला अकाउंट ओपन, सॉरी वो वाला अकाउंट है, एक ब्रांच ओपन कर सकता है इंडिया। याद रखिएगा इसको, पेमेंट बैंक के लिए 100 करोड़, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 200 करोड़, प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन करने के लिए 500 करोड़ एंड फॉरेन बैंक ओपन करने के लिए इंडिया में 500 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। एंड ऑल द लाइसेंस विल बी गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में कोई भी बैंक स्टार्ट हो, उस बैंक के लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरबीआई के परमिशन बिना कोई भी बैंक स्टार्ट नहीं हो सकता। Got it? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, what is the unique celestial event set to occur in the Bengaluru on 25th April?
Yes. On 25th April, on 25th April, Bengaluru, India's technical hub. Bengaluru is known as the India's technical hub, and it is called the Silicon Valley of India. Bangalore has different nicknames. Out of that, one is Silicon Valley, one is called Garden City, one is called IT City, one is called Space City. Okay, Bangalore have some different, you know, nicknames. So nicknames तो ये आ गया सब, लेकिन वो 25 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया था? India's technical hub, it poised witness the unique celestial events known as Zero Saturday. It is Zero Saturday. According to the Astronomical Society of India, ASI, Astronomical Society of India, it has observed Zero Saturday on Bengaluru. Here in Bengaluru, there are some famous data you can capture over there. Bangalore में जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को हम केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं. जैसे इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट है, जैसे कि दिल्ली में है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, राजस्थान में सॉरी हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट है. वैसे ही लखनऊ में चौधरी चरण सिंह का एयरपोर्ट है नाम से. यहाँ नागपुर में BR अम्बेडकर का एयरपोर्ट है. ठीक है नहीं, वैसे बहुत सारे एयरपोर्ट है डिफरेंट प्लेसेस में, जिसका नाम किसी महापुरुष के नाम पे और फ्रीडम फाइटर के नाम पे दिया गया है. एंड यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस नेम्स व्हेन गो टू एग्जामिनेशंस, लाइक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इन रांची, रानी अहल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इन मध्य प्रदेश इंदौर, वैसे ही बिजू पटनायक एयरपोर्ट इन भुवनेश्वर ओडिशा, सुभाष चंद्र बोस इन कोलकाता, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इन वाराणसी, रिसेंटली एक एयरपोर्ट का नाम दिया गया, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम को चेंज करके फ्रीडम फाइटर भगत सिंह के नाम पे वो एयरपोर्ट का नामकरण किया गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज जीरो सैटरडे ऑकर? Question number 7, option B is the answer, on the winter solstice. On the winter solstice. Next, which क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा, किस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा नहीं होगा, तो जो ज़्यादा होगा उसको हम डिटेल में जाके डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज द न्यू फीचर्स was introduced on the e-Shram portal? Question number 8, e-Shram portal. Option C would be the answer. It is access to education opportunities for children of migrant workers. Okay, those who are migrant workers who move from one place to another for working profession, like from Odisha, many workers are going to Bengaluru and Surat for their day-to-day activities and work. If they move from one place to another, it is very much difficult to give education to their children because they are migrant. Okay, so government of India have taken the initiative on the basis of e-Shram portal that will access to education opportunities for the children of the migrant workers. And education in our country, you can say it's a right. Okay, up to from 8 to 14 years of age, we must have to take education. It is free of cost and every student must have the right to take the education. It's come to 21A articles. ठीक है,
तो इंडिया में जितने सारे स्टेट है, तो सबसे एजुकेटेड स्टेट कौन सा है और लिटरेट स्टेट कौन सा है देखा जाए तो सेंसस के अनुसार स्टेट इज केरला. Let's go to the next question. What is the theme of the village in Uttarakhand that has been recognized as first Indian state? बोलिए आंसर क्या होगा. The answer is Manna. Manna village. Manna village in Uttarakhand. Manna village in Uttarakhand is known as first Indian village. Known as India's first village or first Indian village. Got it? Uttarakhand. The capital of Uttarakhand is Dehradun and Gairsen. There are two capital of Uttarakhand. Dehradun and Gairsen. नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. आपको तो पता है इंडिया के पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड आल्सो. Question number 10. What is the cause of the conflict in Sudan? Yes, बोलिए. What is the major cause? The conflict of Sudan occurs due to a dispute over an internationally supported plan to establish a new civilian government. 4 years after the overthrow of the authorization leaders Umar al-Bashir and 2 years after the military coup. Okay, the answer will be a dispute over an international support plan to establish a new civilian government in Sudan. Next. Question number 11. What is Operation Kaveri? Option B will be the answer. A rescue mission to evacuate Indian from Sudan. अभी जो सूडान में प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम से हम इंडियन जो भी इंडियन है वहाँ से उनको कैसे हम इवाकुएट करें, इसलिए प्लान और मिशन किया गया. उसका नाम है कावेरी, मिशन कावेरी. जैसे अफगानिस्तान में तालिबान जब ऑक्यूपाई किया, तालिबान जब ऑक्यूपाई किया उस टाइम में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे सपोर्ट और बहुत सारे हेल्प के हाथ बढ़ाए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इवाकुएट किए गए बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जो अफगानिस्तान में रह रहे थे. उसके बाद जब यूक्रेन और रशिया के साथ फाइट हुआ उस टाइम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन गए हुए थे एजुकेशन के लिए, एज वेल एज बहुत लोग गए हुए थे जो नौकरी की तलाश में थे और नौकरी कर रहे थे. जब वो वाला फाइट शुरू हो गया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में, उस टाइम में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत इनिशिएटिव लिए कि हमारे इंडियंस को वहाँ से निकाले. वैसे ही सूडान में जो अभी डिस्प्यूट हो रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम के अंदर अगर कोई इंडियन आ जाता है तो ज़्यादा दिक्कत होगा. इसीलिए एक ऑपरेशन के थ्रू हम उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं फ्रॉम दैट प्लेस. नेक्स्ट.
Who has been appointed as the chairman of MMA-1 Federation? MMA-1 UFC पता है ना आपको? UFC MMA, okay. MMA stands for Mixed Martial Arts. MMA stands for Mixed Martial Art. Mixed Martial Art, जिसमें फाइटर्स फाइट करते हैं। मार्शल आर्ट के जो भी तरीके हैं, जो भी मतलब टेक्निक से वहाँ अप्लाई किया जाता है, जैसे मूवी में देखा होगा सुल्तान नाम का एक मूवी है, जिस तरह का से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस किया जाता है, मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग किया जाता है, उस टूर्नामेंट जहाँ होता है उसको MMA टूर्नामेंट बोलते हैं। उस इंडिया में जो भी बच्चे हैं और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी तक तो एक ही पार्टिसिपेंट MMA और UFC के लिए चूज किए गए हैं, ओके। लेकिन इंडिया में जो MMA का इंस्टीट्यूशन है और फेडरेशन है, उनका चेयरमैन वो महावीर सिंह पोगाट। कौन हुए? महावीर सिंह पोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which country are the part of INSTAC? INSTC. INSTAC stands for International North-South Transport Corridor. International Northeast Transport Corridor. Okay, it's a length of 4,500 miles or 7,200 kilometers. 7,200 kilometers corridor for the trade and development purpose. कुछ कंट्री ने मिलके ये सब प्लान किए हैं कि डिफरेंट जगह से होके जाए और उसका बेनिफिट भी रोड के थ्रू हो गया और मतलब पानी के थ्रू ही हम पा जाएंगे। तो इसमें कौन कौन सा कंट्री इन्वॉल्व है? हियर इंडिया, रशिया एंड ईरान आर इन्वॉल्व्ड। ओके, ईरान, रशिया and India are the main partner of INSTC, like other Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Belarus and Oman also the participant of INSTC. Let's go to the next question. What is the purpose of National Technology Center for Post, Waterways and Coasts? Here's the answer. To enable Make in India tech solution for the sector. इंडिया में आफ्टर द गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट एक नारा दिया गया, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सस्टेनेबल इंडिया। ओके, सो to make this Atmanirbhar means we will not depend to anybody or any other countries for our help. We can produce our own materials, our own fundamentals, कि हम दूसरे के ऊपर अभी हावी मतलब डिपेंड होना ना पड़े। ठीक है, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव दिया गया कि जो भी इंपोर्ट करना है मत करो, यहाँ लाके उसको असेंबल करो। ठीक है, नहीं इंपोर्ट को थोड़ा हम रिड्यूस की करें और जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है इंडिया में हम ओपन करें। हम इनवाइट किए डिफरेंट कंट्रीज को आके इंडिया में अपना और पर्टिकुलरली हमारे सेक्टर में आके अपना कंपनी फॉर्म करें। तो कंपनी फॉर्म करने से क्या होगा ना, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया और उसके बाद
बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंडिया के मार्केट में आ गया। तो इस तरीके से सब जन एक एक करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2023? Malaria Day is observed on 25th April. India is all set to eradicate malaria, sorry, to eradicate malaria at the year 2030. इंडिया में मलेरिया को खत्म करने के लिए 2030 तक टाइम लग जाएगा। Okay, what is the theme? The theme is time to deliver zero malaria. Invest, innovate, and implement. Time to deliver zero malaria. Invest, innovate, and implement. Got it? Same as Government of India has set a target for zero TB, tuberculosis, by the year 2025. ओके, सो आज के लिए इतना ही था। इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स था हम डिस्कस किए, उसके पेरिफेरियल एरिया भी हम डिस्कस किए। आई होप आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूम हो गया होगा, कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आप जाकर फिर से भी थोड़ा एनालिसिस करिएगा कि और क्या डेप्थ में क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो भी बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आरआरबी पीओ, विच एग्जाम इज गोइंग टू हेल्ड इन अगस्त। सो आपके पास 3 महीना है, 3 महीने में आप अच्छे से पढ़ सकते हो। 3 महीने में 90 डेज है, 90 इंटू 2 180 मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है नहीं? 180 अगर नहीं होता है तो 150 नंबर्स ऑफ मॉक टेस्ट दे ही सकते हो। So don't sit in your comfort zone, come out and practice more and more. That will give you result at the end. So thank you so much for all your patience listening. I hope that you invest your time in a proper way and get your job as soon as possible. All my wishes are with you. Thank you so much.